Hello, Assalamu alaikum to all of my students. Today I am going to deliver my lecture for the 11th class students, and this is specially on the gas laws. So let us go for the gas laws. Gas laws होते क्या है? इससे पहले हमने डिटेल में पढ़ा कि गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, और कौन कौन से मेजरेबल प्रॉपर्टीज इनकी है वो हमने डिटेल में पढ़ी है. तो अब जाके हमें फोकस करना है ऑन द गैस लॉस. गैस लॉस होते क्या है, ठीक है. तो पहला पॉइंट जो हम गैस लॉस के बारे में बताते हैं कि ये गैस लॉस होते क्या है एक्चुअली, ये हमें बताते हैं अबाउट द मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द गैसेस. So to describe the macroscopic behavior of a gases, we need certain type of generalizations, and those generalizations are known as gas laws. So that would be our first point. So to describe the macroscopic behavior of gases, ठीक है. So to describe the macroscopic, why macroscopic? Macroscopic means for in bulk, when we are talking about the gas as a whole, not for a single molecule. Whenever we are dealing with the gas laws, we are dealing with the gas as a whole, as a macroscopic, as in a bulk, but not as a single entity, as a single molecule. ठीक है. तो इसीलिए to describe the macroscopic behavior of the gases, कि ये gases जो है ये कैसे इनका behavior क्या है, वो behavior macroscopic behavior या in bulk या total behavior of a gas that is described by means of certain generalizations, और उन generalizations को हम कहते हैं gas laws. तो अगर हम second point यहाँ पे focus करेंगे वो ये है कि अगर हम देखेंगे, इससे पहले हमने measurable properties पढ़ी. हमारे पास measurable properties जो गैस की होती है, जिन पे ये state of the gas depend करता है कि इसका state क्या होगा. So that is those measurable properties are four, that is pressure, volume, temperature and the amount of the gas. And these measurable properties अगर हम देखेंगे, so what is the interrelationship among these measurable properties of the gas, ठीक है ना. That interrelationship among the different measurable properties of a gas are actually governed by the gas laws. So अगर हम यहाँ पे second point लिखेंगे, so second point क्या होगा हमारा, it gas laws actually give the interrelationship between the measurable properties of a gas. Properties of a gas, और ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन सी है, दैट इज दिस प्रेशर, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है एंड अमाउंट ऑफ द गैस है. सो दीज एक्चुअली रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द गैस. मैंने इससे पहले भी बताया पहले लेक्चर में कि दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड, दे आर हैविंग for a particular state of a gas, this pressure is having a fixed value, volume is having a fixed value, temperature is having a fixed value, and amount of the gas is having a fixed value. If we are changing, let us suppose one parameter, we are changing the parameter of, we are changing the measurable property of temperature here, and it will drastically it will change the value of volume, it will change the value of the pressure. So that means this pressure will change, this volume will change by the change of the temperature, and that is why this gas will achieve a new state. Initially it was in one state where this pressure would be having one value, volume will be having another value, temperature would be having another value, and this amount of the gas would be having one value. But when we are changing the temperature, this change in the temperature will lead to the change in the pressure, that will lead to the change in the volume, and with the result we are getting a new state of the gas. So that would be the second point. Clear? तो यही interrelationship between the measurable properties of the gas is governed by certain gas laws. So इसमें हमारा first law जो है, जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, तो that is the Boyle's law. ठीक है. तो ये अगर हम Boyle's law की बात करेंगे, Boyle's law क्या है, ठीक है, Boyle's law तो रॉबर्ट बॉयल ने ये दिया है, ठीक है, in 1662, ठीक है. एंड अगर हम कहेंगे हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ द गैस मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, तो ये बॉयल्स लॉ जो है, दिस इज एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम. कीप इट इन माइंड. सो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसका दूसरा नाम है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी, या आप सीधे पॉइंट लिख सकते हो इसमें कि पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, इट वाज this law was given by Robert Boyle in 1662, and it gives the interrelationship between the pressure and the volume of the gas, between the volume of a gas and the pressure of the gas. ठीक है. So that way it will be defined. So now what is the statement of the Boyle's law? Boyle's law हमें क्या बताता है? Boyle's law हमें कहता है कि अगर हम
इस टेम्परेचर को और इस अमाउंट ऑफ द गैस को कांस्टेंट रखेंगे, इन दो को कांस्टेंट रखेंगे, और फिर देखेंगे कि जो ये वॉल्यूम है ये कैसे प्रेशर से चेंज होता है, या जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर ऑफ द गैस है, ये कैसे चेंज होगा बाय मींस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, एंड दैट इंटर रिलेशनशिप इज नोन एज द बॉयल्स लॉ। और ये हमें बताता है कि व्हेन वी आर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हेन वी आर keeping the amount of the gas constant, then at that time the volume of the gas is inversely proportional to the pressure of the gas. So this is the statement. Statement हमारा क्या है? Statement हमारा ये है कि ये बताता है at constant temperature the volume of a given mass of a gas, given mass means कि amount of the gas is constant. The volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure exerted on it. ठीक है, सो स्टेटमेंट फिर से मैं रिपीट करूंगा, क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, गिवन मास क्यों? क्योंकि दिस अमाउंट ऑफ दिस गैस इज कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर to the pressure of the gas exerted on it. ठीक है, सो मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे we can write down V is inversely proportional to 1 over P. ठीक है, या changing the proportionality into equality, we are multiplying by a constant, we can write this way, that constant by P. So it will be V is equal to constant divided by T, or we can say PV is equal to constant, और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि PV is equal to constant. तो इस तरह से हमारा और एक रिलेशनशिप, ये और एक स्टेटमेंट मिला यहाँ पे हमें बॉयल्स लॉ के लिए, और वो क्या होगा? वो ये है at like the product of the pressure and volume of a given mass of a gas is constant at constant temperature. That would be our another statement of the Boyle's law. Clear? Now going forward, अगर हम यहाँ पे कहेंगे, so now we got a relationship that pressure volume is equal to constant for the Boyle's law. Now if we are speaking here that let us suppose we have at a temperature of T1, let us suppose the pressure of the gas is P1 and volume of the gas is V1. ठीक है, now keeping the temperature constant T1, what is happening? We are allowing the gas to expand. Let us suppose we have a gas here, इसमें gas हमने fill किया है, let us suppose इसका pressure है P1 और इसका volume है V1. Now what is happening? We are allowing this gas to expand. ठीक है ना, अब मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे इसको अटैच किया है और एक vessel, so what is happening? This gas will expand, so with the result its volume will change to V2 and let us suppose pressure will change to P2. ठीक है, तो pressure change हो गया P2. ठीक है, but at the constant temperature, we are keeping temperature constant. So whenever we let us suppose we are having a gas which is at pressure P1 and volume V1, and it is allowing and at constant temperature it is allowed to undergo expansion, and when it undergoes expansion its volume will change. Let us suppose its volume changes to V2 and pressure changes to P2, then we can say that P1 V1 is equal to constant. Clear? And likewise P2 V2 is equal to constant. So this is also equivalent to constant, this is also equivalent to constant. That means we can write P1 V1 is equal to P2 V2. Clear? So this would be our relationship. One more relationship of finding the so we can write down it this way also, P1 by P2 is equal to V2 by V1. So this would be our another relationship. That means, so what is the use of this relationship? Means that if you are if you have been given a pressure, initial pressure, and you have been given the initial volume, and you have been given the let us suppose final pressure, and you can find the final volume by using this relationship, final volume of the gas by using this relationship, but at constant temperature. Clear? या ये relationship भी आप use कर सकते हो. Clear? Got my point? जैसे मैं यहाँ पे let us suppose I will let you understand this by taking some values, arbitrary values for the reaction. Let us suppose if the volume if the pressure of the gas is 2 atmospheres, ठीक है, and if the volume of the gas is 20 ml. Clear? So let us suppose now the gas expands, and when it expands its volume increases, and let us suppose its volume increases to 40 ml. So now you have to calculate what will be the pressure. But what we have kept constant, temperature has been kept constant, so we can use the relationship. So we have to go for the P2. So हम लिख सकते हैं P1 by P2 is equal to V2 by V1. तो हमें P2 मालूम करना है ना, ये यहाँ पे जाएगा, ये रिलेशन बनेगी P1 into V1 divided by V2 is equal to P2.
तो ये हमें रिलेशन बनेगी, तो इस तरह से हमें P2 मिलेगा। तो P2 में लिखूंगा बराबर P1, P1 किसके बराबर है 2 एटमॉस्फेयर्स इंटू V1 कितना है हमारा 20 ml डिवाइडेड बाई V2 कितना है 40 ml। सो ये जीरो कैंसल, 2 1s 2 2s 4 2 1s 2 1, so it would be 1 atmosphere. So what would happen, the pressure of the gas will become 1 atmosphere. So initially it was 2 atmospheres. Now understand the physical significance. Initially it was 2 atmospheres and volume was 20 ml. But what has happened, the volume has been increased, and when volume increases, what is happening to the pressure? The pressure has been decreased. It was initially 2 atmospheres, now it is 1 atmosphere. That is what we are speaking, that volume is inversely proportional to pressure. That means if we are increasing the, if we are decreasing, if we are what is happening to the volume? If we are increasing the volume, we are increasing the volume. What is happening to the pressure? The pressure will decrease. And same is the case. Pressure was initially 2 atmospheres, and now it is 1 atmosphere. Clear? So this is the Boyle's law. Now Boyle's law में कुछ और भी हमें पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा आपको. So अगर मैं यहाँ पे कहूँगा, you can go for one more relationship. आपको पता ही है कि आपको यहाँ पे आ गया कि pressure into volume is equal to constant. ठीक है ना? Let us suppose if you are going for the mass of the if you are going for the density of the gas, so you can write density of the gas is equal to mass of the gas divided by volume of the gas. Clear? या आप लिख सकते हो volume of the gas is equal to mass by density. इसको interchange करो. Clear? It would be mass by density. So substitute the value of V in this equation. We can write P into V के बदले में क्या लिखूंगा m by d. So it will be m by d is equal to constant. So we know that this mass is all this is a constant for a given mass of a gas. So you can go for P by d will be also equivalent to constant. So when this is equivalent to constant, so let us suppose if this is P1, we can go for a relation P1 by D1 is equal to P2 by D2 and clear? So this would be your another relation, means that if you are having a pressure of P1 of a gas with a density of D1 and let the pressure changes to P2 and density changes to D2, then the relation will be P1 by D1 is equal to P2 by D2, and that would be our another relationship. So ये हमें ज़रूरत पड़ेगी when you have to find the density of the gas. When you are given the density of the gas initially, pressure given initially and final pressure, and you can find the density after its pressure has been changed. ठीक है? So that way you can go for this relationship also. Now इसके बाद अगर हम जाएंगे तो we will go for the graphical representation of the Boyle's law. अगर हम जब हम ग्राफ डालते हैं, when we are going for the graphical representation, ठीक है, तो we write here the pressure, let us suppose, and we are here writing the volume. X-axis we are taking the volume and pressure we are taking on the y-axis, and इसको कहते हैं pressure volume isotherm. When we are plotting a graph between pressure and volume, but at constant temperature, when we are keeping the temperature constant, that is known as pressure volume isotherm. क्यों isotherm क्यों? Therm means temperature, iso means same temperature. This graph has been done for at the same temperature. So graph हमारा कैसे आएगा? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, V is inversely proportional to P, तो हमारा जो ग्राफ है that is coming out to be hyperbolic. ठीक है? So it is coming out like this way. Clear? So likewise कभी कभार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे इसको, तो वहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे मैं ऐसे कहूंगा, इफ आई एम गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर and 1 over V, union is the reciprocal of the volume. ठीक है? Now I am going for the reciprocal of the volume. ठीक है? Means that यहाँ से यहाँ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज. यहाँ से यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. ठीक है? Because we are taking the reciprocal. Keep it in mind. So now means that अगर यहाँ से यहाँ हम जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज यहाँ से यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ इसमें यहाँ से यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. When we are going for the graph, अगर मैं ऐसे बताऊंगा, मैं लिखूंगा P is inversely proportional to
it is inversely proportional to V, but it is directly proportional to 1 over V, है ना. जब हम कहेंगे P is inversely proportional to V, but P is directly proportional to 1 over V, है ना. तो अगर इस होल टर्म को लेट अस सपोज को हम x लेंगे तो P becomes directly proportional to x. तो जब डायरेक्टली रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा? ग्राफ विल बी a straight line passing through the origin. Clear? So we are getting a graph like this. ठीक है. So when you are so keep it in mind when you are going to plot a graph between pressure and reciprocal of the volume, you are getting a straight line. Clear? Now यहाँ पे और एक पॉइंट में बताऊंगा. Now let us suppose you are having a pressure volume graph for a particular gas measured at different temperatures. That way you will get different types of curves here. Okay, अगर आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा कि you are having different types of pressure volume curves here. And now what you have to go for, let us suppose अगर आप देखोगे what is this curve? This curve is for a gas at temperature T1. Let us suppose this is the curve for the same gas at temperature T2, and this is the curve for the same gas at temperature T3. ठीक है. So you have been given regarding this competitive examination point of view, whether you are going for the NEET or JEE examinations or even AIMS examinations, this question has been posed so many times कि अगर आपके पास different curves है, they are of a particular gas and they are at different temperatures, and then you have to find as per the graph whether which curve is having the higher temperature. Yeah, arrange these temperatures in the increasing order in their increasing order. For example, आपका ऑप्शन आएगा T3 is greater than T2 greater than T1, या T1 is greater than T2 is greater than T3, या ऐसे आएगा T1 greater than T2 less than T3. क्लियर? या आपको ऐसा आएगा T1 is equal to T2 is equal to T3. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि which curve represents the higher temperature curve. ठीक है. तो आपको क्या करना है? What you have to go for? Simply एक काम करो आप, you fix the volume. कैसे आप वॉल्यूम को फिक्स करोगे? You draw one line, draw a perpendicular line from this to volume axis. Okay. So this will be the perpendicular line. ठीक है. तो इसका मतलब है, and this line cuts this curve at this point, this curve at this point, and this curve at this point, and all the three curves of the gas will be having same volume. ठीक है ना? So this much is the volume for all the three curves. ठीक है. Now what would be the pressure? अगर आप इस कर्व के लिए देखेंगे, what is the pressure? It is this much. अगर हम देखेंगे इस कर्व के लिए, what is the pressure? It is this much. अगर हम देखेंगे इस कर्व के लिए, for the fixed volume, the pressure is this much. ठीक है. So we have fixed the volume for the three curves, and what comes out that पहली कर्व का हमें इतना प्रेशर आएगा, दूसरी कर्व का इतना प्रेशर आएगा, तीसरी कर्व का यहां से यहां तक प्रेशर आएगा. ठीक है. तो अगर आप देखोगे आगे चलकर जब हम गेल-लुसिक लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर ज्यादा होगा. ठीक है. कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट. तो वॉल्यूम हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है. ठीक है. तो अगर मैं बताऊंगा कि यहाँ पे किस वाले में किस कर्व में प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो अगर आप देखोगे T3 द कर्व, दिस कर्व, अगर मैं इसको A कर्व लिखूंगा, इसको B कर्व, इसको C कर्व लूंगा, तो दिस कर्व A इज एट हायर प्रेशर. ठीक है ना? for the same volume for the same volume. Likewise this curve B जो है, it is having lower pressure than the curve A, and least pressure is for the curve C. ठीक है ना? So जब जिसका प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर किसका है? कर्व A का. तो इसका मतलब है इसका टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा है. So T3 will be higher followed by T2 followed by T1. So first one is the option. This is the correct option. ठीक है. तो इस तरह आप निकाल सकते हो इसका कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि how we can find out what is their order of these temperatures. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आया है. Now let us suppose अगर मैं यहाँ पे कहूंगा, ठीक है, you can fix even pressure also and then go for the volume and look for the volume.
ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं और एक कर्व यहाँ पे दूंगा, और एक ग्राफ अगर मैं यहाँ पे दूंगा, लेट अस सपोज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है। हमें पता ही है कि जो ये प्रेशर वॉल्यूम है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट डज नॉट वेरी विद प्रेशर। प्रेशर से वेरी नहीं होगा, बल्कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ बॉयज हमने पढ़ा कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट at a constant temperature. It will not be changed by the application of the pressure. So that means the curve will come. So when it remains constant, that means curve will come like this way. Clear? So the curve will be we are getting a straight line parallel to the pressure axis या parallel to the x-axis. Clear? So इस तरह से हमें ये ग्राफ मिलेगा। अगर हमें इसी में ऐड करूंगा यहाँ पे, let's suppose you are having 3 curves. This one is at T1 temperature, this is at T2 temperature, and this is at T3 temperature for a particular gas. ठीक है। So for a particular gas, this curve is for at temperature T1, this is at T2 and T3. Now you have to find out the relation, this order of these temperatures, which one is higher and which one is lower. तो जहां पर आपको मिलेगा where there is the maximum value of the product pressure and volume, that would be having the higher टेम्परेचर। सीधी बात है, जब हम किसी गैस को टेम्परेचर देंगे उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जिसका सबसे हाईएस्ट होगा उसी का टेम्परेचर भी हाईएस्ट होगा। तो अगर आप देखोगे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है, जो हाईएस्ट किसका है, T3 का, फॉलोड बाय T2, और सबसे कम किसका है, T1। तो इसका मतलब है T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इस तरह से भी आप रिलेशन ये ग्राफ को डाल सकते हो, ठीक है। सो दिस फिनिशेस आवर बॉयल्स लॉ। क्लियर? सो अब जो हमें पढ़ना है, सो नाउ लेट अस गो फॉर वन प्रॉब्लम। यहां पे हम प्रॉब्लम एक सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप V1 इज इक्वल टू P2V2। सो लेट अस सपोज देयर इज अ लैग, ठीक है, और इस लैग के नीचे एक एयर बबल है, ठीक है, दिस इज इन वाटर, और ये एयर बबल जो है इसका रेडियस जो है, लेट अस सपोज इट इज 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, लेट अस सपोज इट इज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर्स। नाउ दिस बबल, लेट अस सपोज हियर द प्रेशर P1 मैं लिखूंगा, लेट अस सपोज इट इज 1 atmosphere, sorry, here will be higher pressure. Let us suppose it is 8 atmospheres. Okay. Now what is happening? Let us suppose this bubble moves upwards to the surface, and when it moves to the surface, what will happen? The pressure is low, means that the volume of the bubble will increase. When the volume of the bubble will increase, that will the radius will change. Let us suppose this is R2, and this R2 we have to find. R1 is 2 centimeters, R2 we have to find. ठीक है। तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, उसका मतलब है उसका रेडियस इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे प्रेशर जो है दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द R2। आपको R1 दिया गया है। क्लियर? सो नाउ व्हाट यू कैन गो फॉर, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। क्लियर? और आपको पता है वॉल्यूम जो है इट इज 4/3 पाई R3, है ना? क्लियर? सो सबस्टिट्यूट द वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ ना P1 into 4/3 पाई R3। लेट अस डेवलप द इक्वेशन। दिस वुड बी V1 के लिए मैं लिखूंगा R1 ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूंगा P2 into 4/3 पाई R2। क्लियर? तो 4/3 पाई कैंसल, इट विल बी P1 R1 इज इक्वल टू P2 R2। ये हमारी रिलेशन बन गई। यू कैन यूज व्हेन यू हैव प्रेशर गिवन, यू हैव रेडियस गिवन, you have the final pressure given, and you have to find out the radius. So how you can find out? What you can write? आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे R1 divided by R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू P2 by P1। इज इट? या लिखोगे R1 by R2 इज इक्वल टू, तो ये यहाँ इसको ट्रांसफर करो, यहाँ पे क्यूब को यहाँ पे, ये क्यूब रूट बन जाएगा। So it will be raised power 3 को यहाँ पे, it will be 1/3, so it will be cube root of P2 by P1। Clear? Now R1 by R2 is equal to cube root of P2 कितना है हमारा?
P2 हमारा है, दिस इज द फाइनल, सो 1, तो P1 कितना है 8 एटमॉस्फेयर है ना, तो इट वुड बी इक्वल टू 1/2 है ना। सो R1 by R2 हमें क्या निकलेगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1/2, तो R2 कितना निकलेगा 2 R1, दैट वुड बी इक्वल टू 2 R1 हमें कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, सो इट वुड बी 4 सेंटीमीटर। So the radius of the air bubble will increase to 4 centimeter. That means the volume of the bubble will increase, because at the bottom of the, when we are going for at the bottom of the lab, there will be pressure high, so volume will be less. But when the bubble will move on the surface, the pressure is low, so volume will be higher. So that means radius will be higher. That will be 4 centimeters. So that way you can go for the calculation of the radius of the bubble. This we have finished this. You can go for one more graphical representation. I think I should show you that one also. Yes. So let us suppose when you are going for the pressure volume graph, for example, I am going for 1/V. ठीक है? And you will get different curves. Let us suppose you are getting this one, you are getting this one second, this one third, let us, this is one T1 at T2, this is at T3. Now what you have to go for, you have to find out what you have to find out, and you have to find out which one is higher, which temperature is higher, and you have to arrange these temperatures. So आप क्या करोगे, what you have to go for, you have to fix the volume. ठीक है, आप वॉल्यूम फिक्स कर सकते हैं, प्रेशर फिक्स करो, दो में से एक करो. So let us suppose आपने वॉल्यूम को फिक्स किया, it cuts this curve at this points, these 3 points. Clear? Now draw the projections on the pressure axis. It would be the projection of this curve, this line. This will be the projection of this line, and this will be the projection of this line. ठीक है? तो वॉल्यूम हमने फिक्सड लिया. तो आगे चलकर जब हम लॉ एक पढ़ेंगे, दैट इज, वो हमें बताता है गेल-लुसिकस लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्या बताता है? मतलब अगर हमारे पास कोई गैस है तो हमने उसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका वो प्रेशर भी इंक्रीज होता है. ठीक है, सीधी ही बात है. जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी. जितनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी उसके थ्रू उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे. ठीक है, जितना कोलिजन ज्यादा होगा तो उसका मतलब है उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा. तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर होगा. तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है, ये प्रेशर किसका है, दिस कर्व T3 का. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस टेम्परेचर विल बी हाईएस्ट, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस. सो T3 विल बी ग्रेटर देन T2, ग्रेटर देन T1. ठीक है, इस तरह से भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं. Please, these graphs are very much important from competitive examination point of view. With the result, we have finished this Boyle's law.